Hey guys, I am Anu Prajapati and today in this video we'll discuss about the book Gulliver's Travels, which is written by Jonathan Swift. So let's see what are the things which we are going to discuss here about this book. First of all, we'll discuss about introduction to the author Jonathan Swift, and after that we'll discuss about introduction to this book. And this book has 4 parts. But today in this video we'll discuss about only these two aspects, introduction to the author and introduction to this book. After this video, I'll make sure to make individual video on each book, in which we'll discuss about the detailed summary of each book. So we are discussing introduction here so that you will be able to understand all those 4 parts in a better way. Because if you know the introduction or background of this book, you will be able to understand really in a better way. So without any further delay, let's discuss about introduction to the author. So guys, here is the introduction to the author. Jonathan Swift was born in Dublin in 1667 and he was one of the greatest English prose writer. He came of an English family which has settled in Dublin, Ireland. So Jonathan Swift was from an English family from Dublin. His mother left him when he was just 3 and he was looked after by his uncle. So his mother left him when he was just 3 और इसकी जो भी देखभाल है वो सब इसके अंकल करते हैं. Swift's stay with William Temple proved to be the most useful period of his life. He read historical and classical works in Temple's library. सो स्विफ्ट जो है विलियम टेम्पल के सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं. इनके यहाँ पर विलियम टेम्पल जो है एक पर्सन होते हैं जिनके यहाँ पर स्विफ्ट एज अ सेक्रेटरी वर्क करते हैं. एंड इन द लाइब्रेरी ऑफ विलियम टेम्पल स्विफ्ट रेड हिस्टोरिकल एंड क्लासिकल वर्क्स एंड दिस टाइम प्रूव टू बी द मोस्ट यूजफुल पीरियड ऑफ हिज लाइफ. स्विफ्ट ऑल्सो सर्व्ड एज अ ट्यूटर टू एस्थर जॉनसन, Temple's illegitimate daughter. She played an important role in Swift's emotional as well as literary life. So जो जॉनथन स्विफ्ट हैं, ये एस्थर जॉनसन एक गर्ल है जिसके जो कि इलेजिटिमेट डॉटर है टेम्पल की, उसके ट्यूटर की तरह भी वर्क करते हैं. और जो एस्थर जॉनसन है वो स्विफ्ट की इमोशनल और लिटररी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सर विलियम टेम्पल डाइड इन 1699, लिविंग लेगेसी फॉर एस्थर एंड अपॉइंटिंग स्विफ्ट एज हिज लिटररी एग्जीक्यूटर. This is very important. Whether or not private marriage took between them is one of the puzzles of an obscure love story. We don't know they got married or not. इनके बीच में शादी होती है नहीं होती है. We don't know about this because author did not mention. But we know he was passionately devoted to her. Her death in 1728 was a blow from which he never recovered. सो जो ये गर्ल होती है एस्थर जॉनसन, शी ऑल्सो डाइड इन 1728 एंड फ्रॉम हर डेथ स्विफ्ट जो है वो कभी रिकवर कर ही नहीं पाते हैं. इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स स्विफ्ट वॉज अ कंजर्वेटिव बिलीवर इन अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द स्टेट. सो ये इनके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज हमें बताए गए हैं दैट स्विफ्ट वॉज अ कंजर्वेटिव बिलीवर इन अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड इन द स्टेट. सो स्विफ्ट्स मेजर सटारिकल वर्क्स इंक्लूड अ टेल ऑफ टब, The Battle of the Books and the Gulliver's Travels. These are few satirical works which he wrote. And his Journal to Stella, जो इनकी Journal to Stella है, it was correspondence to Esther Johnson. So उन्हीं की उसमें लिखते हैं याद में या जो भी सारी चीज़ें हैं. And he also wrote several pamphlets on church and relating to Ireland. He also wrote some poems as well. So that's all about introduction to the author. Now we'll discuss about introduction to this book. और introduction to this book को आप ज़्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपको एक बार introduction अच्छे से clear हो गया तो जब मैं आपके साथ पर्टिकुलर बुक की जो भी समरी है वो डिस्कस करूँगी तो आप बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बुक. So guys, here is introduction to this book and it is Swift's most popular work of Swift. Began perhaps in 1721 and finished by 1725. It is a tale of various adventures of Lamel Gulliver. So जो ये बुक है Gulliver's Travel, एक्चुअली इसमें एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है Lamel Gulliver and he took various adventures. So it is a tale of his adventures. It is Swift's most comprehensive and brilliantly worked of satire on man and civilization. This is his most comprehensive and brilliantly worked on satire on man and civilization, particularly we can say. And for its element of fantasy, this book is full of fantasy. काफ़ी interesting है. Because of its fantasy elements, it becomes a children's classic.
Gulliver in the Land of Lilliput is one of the most popular stories for children in English. Maybe you read in your childhood about this book Gulliver's Travel. So Gulliver's in the Land of Lilliput is most important stories of children in English. आप लोगों में से काफी ने सुना भी हो, पढ़ी भी हो. Gulliver's Travels shows us pretensions, treachery, cowardice, vanities of human nature on the one hand, and on the other hand its endurance, curiosity and spirit of adventure. So we can say all these are the themes of Gulliver's Travels. ये बुक एक तरफ तो हमें ये सारी चीजें दिखाती है, pretensions, treachery, cowardice, और दूसरी तरफ ही endurance, curiosity and spirit of adventure. This book is divided into 4 parts. As I told you, Gulliver's Travels is divided into 4 parts. And each book describes a new kind of encounter and experience for Gulliver, Lamel Gulliver. So ये जो book है Gulliver's Travels, actually this book has total 4 parts. And in each book, he took a new adventure, a new voyage. So each book describes a new kind of encounter and experience for Lamel Gulliver. Actually Lamel Gulliver took any voyage. और उस जगह पर जाने की बजाय वो किसी और ही जगह पर पहुंच जाते हैं हर एक बुक में. So for him, it was a new kind of encounter and experience. So it is written here, each book begins with a sea voyage undertaken by him and every time for one reason or other he is cast away. वो हर बार एक सी वॉयज स्टार्ट करती हैं, बट हर बार वो कहीं और जाने की बजाय डिफरेंट प्लेस पर पहुंच जाते हैं, मे बी some reason or other. Each time he reaches a place where he meets a new kind of experience not to be found in day-to-day world. और हर बार वो एक ऐसी प्लेस पर पहुंचते हैं जहां पर वो ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं जो आज के डे टू डे वर्ल्ड में it is very difficult to even imagine. First time he reaches the land of Lilliput where man and women are no taller than 6 inches. So जो first book है that is his voyage to Lilliput. और इस बुक में जो गलीवर है, लैमेल गलीवर है, वो लिलीपुट जाते हैं जहाँ के जो मेन और विमेन होते हैं दे आर नॉट टॉलर देन 6 इंचेस, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. एट फर्स्ट ही इज मेड अ कैप्टिव एंड लेटर ऑन बिकम्स फ्रेंड ऑफ द किंग. सबसे पहले तो उन्हें देखकर वहाँ के लोग डर जाते हैं और कैदी बना लेते हैं, बट उसके बाद जो गलीवर है वो वहाँ के जो किंग होते हैं उन्हीं के फ्रेंड बन जाते हैं. So by the end of the book, he becomes the victim of the palace intrigues and he has to run away from there to save his life. So जब बुक खत्म होने वाली होती है उस टाइम पर सिचुएशन ये होती है कि गुलिवर को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है. In this part जो ऑथर है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? That human ego which makes him consider himself as infinitely taller than others. कि जो हमारी ईगो है, जो हमारा मतलब हम इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि हम उसके सामने दूसरे पर्सन को कंसीडर नहीं करते. ह्यूमन ईगो जो है वो हमें ऐसा कंसीडर कराती है दैट वी आर इन्फिनेटली टॉलर देन अदर्स. दिस इज अबाउट द फर्स्ट बुक. देन द सेकेंड बुक, द सिचुएशन इज एग्जैक्टली रिवर्स्ड एंड द सेकेंड बुक गुलिवर रीचेस द लैंड ऑफ ब्रॉबडिंगनैग्स बिफोर whom गुलिवर हिमसेल्फ इज अ टाइनी क्रिएचर. सो सेकेंड बुक में जो गलीवर है वो ब्रॉबडिंगनैग जाते हैं और वहाँ के जो क्रिएचर्स हैं वो जस्ट अपोजिट है. गुलिवर उनके सामने छोटे प्रिटेंड होते हैं. द ब्रॉबडिंगनैगियंस लुक अपॉन हिम विद अम्यूजमेंट एंड लिसन टू हिज टॉक्स ऑफ हिज ऑन सिविलाइजेशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ हिज ऑन सिविलाइजेशन. सो जो ब्रॉबडिंगनैगियंस लोग होते हैं वो गलीवर्स की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि गलीवर जो है वो उनके लिए एक अम्यूजमेंट का सोर्स है. वो उसको देखकर पूरा शॉक हो जाते हैं कि कोई पर्सन इतना छोटा कैसे हो सकता है, इतना टाइनी क्रिएचर कैसे हो सकता है. तो गलीवर उनको अपनी सिविलाइजेशन के अचीवमेंट्स और अपनी सिविलाइजेशन के बारे में बातें बताता है. So guys, then there is part 3 which describes Gulliver's voyages to Laputa, Balni Barbi, Glubdubdrib, Luggnagg and Japan. On each island he encounters a new world. So in part 3 he visited these places. Then there is part 4 which is the final part of this book which takes him to the land of Yahoos and Hoems. You can pronounce it in other way as well if you found it comfortable, but I am pronouncing it Hoems. So some people commenting आप इस तरीके से pronounce कर रहे हो, so don't focus on pronunciation. I pronounced it Hoems. So here Hoems are horses, the most intelligent creatures, and Yahoos are human beings, silly, indolent and inferior creatures. So जो part 4 है याहूज और होएम्स वाला, ये जो होएम्स हैं ये हॉर्सेस हैं और जो याहूज है ये ह्यूमन बींग्स हैं.
याहूज जो है वो सिली है, इंडोलेंट है, इंफीरियर है, जो कि ह्यूमन है, और जो होम्स हॉर्सेस हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर्स है. So guys, except Japan, all the other places mentioned in the Gulliver's Travels are fictitious. मतलब वो exist नहीं करते हैं, they are fictitious. But it's Swift's art of descriptions that he makes each place real for us. वो इतने अच्छे तरीके से describe करते हैं कि हम हर place को imagine कर पाते हैं and that place made real for us. Though he himself has no experience of long voyages. He describes each voyage with such a wealth of geographical details so that voyage seems to be true. हालांकि जो स्विफ्ट है उन्हें लॉन्ग जर्नीज की, लॉन्ग वॉयजेस की कोई भी हैबिट नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर पार्ट को एक्सप्लेन किया है, वहाँ की ज्योग्राफी को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हम वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे फील कर पाते हैं दैट वो सब ट्रू है, इस तरीके से सीम होती हैं वो जैसे सब सच है. So they are seeming to be true to us. So guys, I hope you understood the introduction of Gulliver's Travels, and after this we'll discuss about the detailed summary video of all the 4 parts of Gulliver's Travels. So वो आप ध्यान से ज़रूर देखना, और I hope आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इसके बाद भी if you guys are having any doubt, then you can contact my Instagram, Facebook page or WhatsApp. I'll give the link of all the 3 in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और आप चाहते हैं कि मैं किसी और नॉवल के बारे में डिस्कस करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.